Hello dear students, I welcome you all to my YouTube channel Political Science, and I also want to welcome you all to the new session, especially for the first year BA program and BA Honors Political Science. And I think you all also have started taking your classes, though it is online, but you have to take it very seriously. एंड मोस्ट प्रोबेबली जितनी जल्दी अगर कॉलेज खुल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है और आप फिर दोबारा यू कैन अगेन come to the college and study as you used to do earlier also. But before that, we should also understand that if online classes are going on, so we should take it seriously, okay? Without thinking that we should be able to come to the college and why we are not getting an opportunity to study this way or that way. So it is better we should try to understand that whatever the opportunity we have got right now, even if it is for online, ठीक है, अगर ऑनलाइन के लिए भी हमें ये मौका मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेल प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में, जिन कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन मिला है, दाखिला मिला है, I hope you are all contented and satisfied with whatever the college and courses you have got enrolled. And even if you are not contented and satisfied, still since the session has started, please settle down. As soon as you settle down, it is better for us also to make you focus and drive your attention towards the cause and towards that journey of studying, learning and understanding things. So as far as political science first semester is concerned, if we talk about the honors course, in the first semester you have to study constitutional government and democracy in India, as well as understanding political theory. Okay, so let us first talk about the first semester. Now first semester may be political theory, let us talk about that. Now as far as political theory is concerned, my YouTube channel, it has a playlist, it has many it has various playlists, but there is a playlist on political theory and there are many videos in that. I can't give you the number how many are there. So there are many videos which are there, and I just started it in the pandemic period so that most of you could benefit from that. And in that towards that journey only, so I also thought that since NCERT is a very important textbook to refer for the 11th year, सो उसमें से हम पॉलिटिकल थियरी में कौन कौन से पार्ट्स और सब पार्ट्स रेफर करें, बिकॉज दिस विल हेल्प यू बोथ फॉर द ऑनर्स, ओके, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी एंड द प्रोग्राम दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, दोनों में ही आपको हेल्प करेगा. ये तो जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे ऑनर्स का हो, प्रोग्राम का कोर्स हो, सो दोनों में यू विल बी गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम स्टडिंग दिस. एंड हाउ यू नीड टू स्टडी NCERT इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और पहली बात है, NCERT सिर्फ हमें इसमें नहीं हेल्प करता, NCERT हमें UPSC में भी हेल्प करता है. UPSC में भी हमें चीज़ों को समझने में हमें NCERT हेल्प करता है. और अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ऑप्ट करना चाहते हैं अपने UPSC पैटर्न में, अपने सब्जेक्ट्स लिए हैं, सो दैट ऑल्सो यू कैन लर्न दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ NCERT में कितनी बुक्स हैं. आपको पता ही है कि NCERT से CBSE में NCERT हम फॉलो करते हैं. जिनका ICSE बोर्ड है तो उनका डिफरेंट बोर्ड है, तो दे डोंट फॉलो NCERT. सो बट द CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स दे फॉलो NCERT. तो अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. बट स्टिल इफ़ यू हैव चेंज्ड योर stream, if you are from science stream or if you are from commerce stream and you have shifted to art stream, so how do you need to start your journey towards studying and learning and doing well and getting success? So my channel is an effort to help you to understand, to do it well, very well we can say, and succeed and get right guidance, and obviously in the long term it will obviously help you in achieving what you want. So without wasting any time, let us start the discussion on NCERT.
एनसीईआरटी का जो 11th एनसीईआरटी है वो एक्सप्लेन मैंने किया है इस हमारे जो स्लाइड्स है उसमें, क्योंकि एनसीईआरटी में 10 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, and in 10 chapters there are 5 chapters which are very important from the political theory perspective, whether it's honors or program, and so you have to go through those 5 chapters. 5 chapters में भी आप क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे बेसिकली वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैंने कोशिश की है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर का ब्रेकअप लेके आई हूँ मैं कि व्हाट यू हैव टू स्टडी and what you don't have to study, and then in the next part, this is part 1 of NCERT Explained Political Theory, and the next part obviously the other chapters would be discussed in details. Okay, so since most of you the honors students already they have settled down program में अगर कहीं पे एडमिशन हो भी रहे हैं अगर सो आप लोग भी सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जब तक सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल to subscribe this channel, to share with your friends, put your comments, and if you have any doubt and queries you can ask me. My email is there. So the thing is okay, let's begin with the chapter 1, and this NCERT that 11th NCERT it is about political theory। ठीक है, political theory नाम से ही NCERT है, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल में जाके। NCERT ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी में आप अगर आपका हिंदी मीडियम है आप हिंदी मीडियम में डाउनलोड कर लें। तो पहला है राजनीतिक सिद्धांत, तो एक जो इंट्रोडक्शन है इसमें इस चैप्टर 1 में इट्स अ वेरी वेल आर्टिकुलेटेड चैप्टर। इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति क्या है। दूसरा जो है सब टॉपिक्स इसी चैप्टर के अंदर, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, हम राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं ये इसमें डिस्कस किया गया है। और तीसरा है वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हम क्यों हमें पढ़ना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो क्योंकि आपका सिलेबस, मैंने सिलेबस वेल एक्सप्लेन्ड पे भी आई हैव ऑलरेडी पुट अ वीडियो, फर्स्ट ईयर सिलेबस वेल एक्सप्लेन करके है, so you can just scroll down and check it and go through that link and watch the whole video on that. So what is the syllabus all about and how you have to move on. Okay, तो उसमें जो पहला आपका पार्ट है सिलेबस का वो यहाँ पे चैप्टर 1 से आपका कवर हो रहा है, ठीक है। बहुत इलेबोरेट नहीं हो रहा है, लेकिन 60 to 70% जो भी पॉलिटिकल थ्योरी का एनसीईआरटी में कवर हो रहा है वो आपका बेसिक क्लियर करने के लिए आपको एक अच्छा आंसर लिखने में बहुत हेल्प करता है। तीसरा आपको डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग देता है, और चौथा आपका प्रेजेंटेशन अलग होता है, जो सबको हम सभी एक ही चीज़ पढ़ते हैं और हमारा रिज़ल्ट डिफरेंट होता है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, इसके पीछे कंटेंट बहुत बड़ा काम करता है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड पुट योर दोज अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन योर आंसर्स, इन योर असाइनमेंट्स, इन योर एग्जाम्स। सो यू हैव टू कोरिलेट। सो इसमें आपके जो पहला चैप्टर है और जो सिलेबस का भी जो हमारा पहला, एक्चुअली आपका जो सिलेबस है वो भी ऐसे ही डिवाइडेड है। पहला आपका रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, डेफिनेशन इस पे है, और दूसरा जो सब पार्ट है वो है आपका कॉन्सेप्ट्स पे, और तीसरा आपका डिबेट्स पे है, ठीक है। हालांकि डिबेट्स एनसीईआरटी कवर नहीं करती है, पर डिबेट्स के भी एक आधा चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं एनसीईआरटी, आई विल डिस्कस विथ यू। सो चैप्टर 2 दैट इज़ ऑन फ्रीडम, ये स्वतंत्रता पे है। स्वतंत्रता पे what is freedom, we need to understand the basic idea. Then harm principle, J.S. Mill, जॉन स्टुअर्ट मिल के जो अंडरस्टैंडिंग है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन में हार्म प्रिंसिपल क्या है, इसको डिटेल्स में समझने की ज़रूरत है। तो एनसीईआरटी ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट बेसिक आइडिया। देन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव लिबर्टी। देन चैप्टर 3 दैट इज़ ऑन इक्वालिटी, समानता पे जो चैप्टर मैंने इसमें देखा एनसीईआरटी में, and I found it to be very elaborative and well articulated, and it covers many things, many subparts of the questions that have been asked in the previous years. Okay, and so पहला है why does equality matter, समानता आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों समानता क्यों, इस क्वेश्चन का पूरा अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर।
देन व्हाट इज़ इक्वालिटी, समानता को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है. फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समानता और समान अवसर के, ठीक है, समानता के समान अवसर को डिफाइन किया गया है, अंडरस्टैंड कराया गया है इसमें. और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पूछा गया है, ठीक है. देन द नेक्स्ट इज द थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी. थ्री डायमेंशंस डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्कस थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी. देन यू कैन एक्सप्लेन फ्रॉम हियर ऑल्सो, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डायरेक्टली कर सकते हो, थोड़े एग्जाम्पल्स दे सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो बुक से. मैंने ऑलरेडी बुक्स के जो बुक की बातों को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है सिलेबस में, सो यू कैन लुक इनटू दैट. और देन है आपका फेमिनिज्म. फेमिनिज्म टॉपिक है चैप्टर 3 में, हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं मिलता है, पर एनसीईआरटी की बुक में एक चीज़ जो आपको बहुत देखने को मिलेगी कि किसी भी चैप्टर में कोई भी इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट या हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स वो उन्होंने मतलब हाईलाइट करके एक्सप्लेन किया हुआ है. और इस चैप्टर में इन्होंने फेमिनिज्म एक्सप्लेन किया है, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म एक्सप्लेन किया गया है, समाजवाद एक्सप्लेन किया गया है, हाईलाइट करके उन्होंने बॉक्स बना के रखा है. और हिंदी की एनसीईआरटी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ों को भी आपको इसमें रेफ़र करना है. अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग इज़ इनकम्प्लीट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजीज. ओके, सो उसके बाद जो है इसमें औपचारिक समानता, फॉर्मल इक्वालिटी, डिफरेंशियल इक्वालिटी, जब हम डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं इक्वालिटी में, जिसे हम इनफॉर्मल इक्वालिटी भी कुछ हद तक कह सकते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द अफर्मेटिव एक्शन, जिसे हम सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 ऑन फ्रीडम and chapter 3 on equality. Right now in the part 1 of NCERT Explained, these 3 chapters में ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है. And it is not about that you just have to read only NCERT, क्योंकि NCERT में पूरा सिलेबस नहीं है, मैं बता रही हूँ, डिबेट्स नहीं है NCERT के अंदर, ठीक है. NCERT के अंदर कुछ और टॉपिक्स हैं जो इलाबोरेट तरीके से नहीं लिखे गए, क्योंकि एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है. 11th NCERT है और आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो ग्रेजुएट लेवल पे दे रहे हो, तो थोड़ा सा डिफरेंट है. लेकिन हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक क्लियर करने के लिए, इफ़ यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम and even if you are not from the different stream and you don't have an understanding of political theory, or you have forgotten, you want to revise things, so you can start with the basic thing. And then you can also continue with my book that is on introduction to political theory, जिसमें सारा सिलेबस कवर किया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है मेरी वाली बुक. तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं अभी वाला जो वीडियो है उसमें लिंक भी भेज दूँगी. इट्स बोथ अवेलेबल इन फ्लिपकार्ट एंड अमेजन, यू कैन बाय, and it's a very reasonable rate, and all the chapters and all the syllabus they are covered there. So students, I hope we had a good discussion on political theory and the NCERT, both the Hindi and English NCERT, and how we need to start with the reading NCERT because that helps in UPSC also. And in each chapter what are the subdivisions which we need to understand. So I hope if you like this particular topic, my putting this topic in your video, and so you please share with your friends and do subscribe my channel and like, and God bless you. We will stay connected with the another second part of the NCERT with the next chapter that is on, I think, rights, and to an extent it is on justice. Okay, so those two chapters, justice and rights, will be well explained. So till then, stay connected. Bye.